Assalamu alaikum. My name is Nayab, and the topic that we are going to study today is reflective writing. So, what is a reflective writing? It is an analytical practice in which the writer describes a real or imaginary scene, event, interaction, a thought, or a memory, and then adds a personal reflection on its meaning. हमारे पास जो reflective writing है, it is an analytical practice. Means you have to critically analyze the event or the situation and then write about it. In reflective writing, a writer primarily examines his or her life experience, hence the term reflective. The purpose of writing is to provide platform for the author to not only recount a particular life experience but to also explore how he or she has changed or learned from those experiences. So it is mostly a reflection on one's past actions and attitudes. It is not just merely a description or summary of something that you have observed. आप सिर्फ उसके जो इवेंट है या जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते कि हुआ क्या था. यू क्रिटिकली एनालाइज द होल सिचुएशन कि हुआ क्या था, फिर उस एक्सपीरियंस के बारे में जो है तो गुड और बैड थिंग्स क्या थी. देन आप कंक्लूजन लिखते हैं कि एंड में क्या हुआ, एंड देन योर एक्शन प्लान के अगर आपके पास जो है तो फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई दोबारा से, फिर आप क्या करेंगे. The format of a reflective essay may change depending on the target audience. Reflective essays can be academic or may feature more broadly as a part of general piece of writing for a magazine, for instance. आपके पास जो है तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टारगेट ऑडियंस. एंड रिफ्लेक्टिव एसेज जो है तो या तो एकेडमिक होती हैं. फॉर एग्जांपल आपकी टीचर आपको कोई असाइनमेंट दे दे टू क्रिटिकली एनालाइज अ सर्टेन इवेंट और सिचुएशन एंड देन राइट अबाउट इट. या जो है तो लोग मोस्टली अपने पास कोई डायरी रखते हैं या कोई जर्नल रखते हैं एंड राइट देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस इन इट. तो यह हमारे पास जनरल हो गया. For class assignment, while the presentation format can vary, the purpose generally remains the same. Tutors aim to inspire students to think deeply and critically about a particular learning experience or set of experiences. Here are some typical examples of reflective essay formats that you may have to write. A focus on a personal growth, a type of reflective essay often used by tutors as a strategy for helping students to learn how to analyze their personal life experiences to promote emotional growth and development. जो हमारे पास focus on personal growth है, it is to see how you have grown over the past. कि आप जो है तो अपने past experience से कितना आपने सीखा है, कौन सी चीज़ें आपने अपने past experience से सीखी हैं and how much you have changed over the past years. कि आप कि जो है तो पर्सनल या इमोशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितनी हुई है. Reflection gives the student a better understanding of both themselves and their behaviors. कि how much their attitude and their actions have changed over the past. And a focus on the literature is the kind of writing that requires students to provide a summary of the literature, after which it is applied to the student's own life experience. इट इज़ कि आप जो पास्ट लिटरेचर है उसको समराइज करके उसके बारे में लिखें. अ फोकस ऑन द लिटरेचर एंड देन apply it to your own personal life experiences. What are reflection models and why do we need them? Now, even if your assignment does not give a specific reflection model to follow, you may still want to use one. क्योंकि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन मॉडल्स होते हैं दे प्रोवाइड यू विद अ गाइडलाइन कि आप अपने जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग है उसको कैसे सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. A reflection model is a sequence of steps to follow or a sequence of questions to answer when writing down your account of an experience. When you are new to reflective writing, reflection models can provide a much needed step-by-step guide. अब हमारे पास अगर आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको गिवन होगा या एक गाइडलाइन आपको गिवन होगी, सो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू राइट. अगर आपके पास नहीं होगी तो देन यू वुड राइट हैफेजर्डली और अनऑर्गेनाइज्ड आप लिखेंगे. One of the most popular and handy model is Gibbs Reflection Cycle. Gibbs Reflection Cycle is a learning experience reported. Using Gibbs cycle can look like this. Ab Gibbs Reflection Cycle is one of the format that you can follow
while writing your reflective writing, and it includes a description. What happened? I failed to get the interview I absolutely needed for my dissertation. नाउ डिस्क्रिप्शन जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, उसमें हम लिखते हैं इवेंट के बारे में, डिस्क्राइब करते हैं उस इवेंट को कि हुआ क्या था. Here the event is that I failed to get the interview I absolutely needed for my dissertation. Now the second part of it is feeling, thinking. What were you thinking and feeling? कि जब वो इवेंट या कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ, what were your feelings at that time? What were you thinking then? For a moment, I felt helpless and frustrated, but then I started thinking who else could give me that information. Fortunately, two of my senior colleagues had it and responded gladly to my request. Now, here, the person has described her feelings. उसने अपने feelings के बारे में लिखा है कि जब उसके साथ ये हुआ, जब उसने इंटरव्यू नहीं लिया, उस टाइम उसकी फीलिंग्स क्या थी. शी वॉज फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड. फिर उसके बाद उसने सोचा कि who else could give her the information. Fortunately, two of my senior colleagues had it and responded gladly to my request. Now the third part is evaluation. What was good and bad about the experience? कि उस experience के बारे में good and bad क्या था. Here you uh, provide the good and bad points of your experience. The good thing was that I managed to get information despite the obstacles that seemed overwhelming at the first moment. However, this incident highlighted the gaps in my preparation. I had no plan B in case if my department manager refused to be interviewed. अब यहाँ पे इवेल्युएशन में इट इज़ गुड कि आप जो एक्सपीरियंस है या इवेंट है उसके गुड एंड बैड साइड्स दोनों लिखें अपने इवेल्युएशन में, चाहे एक ज़्यादा भी हो. फॉर एग्जांपल गुड पॉइंट्स उसके ज़्यादा हो, बैड कम हो, फिर भी आप दोनों उसमें ऐड करें. हेयर शी हैज़ रिटन द गुड थिंग एंड देन द बैड थिंग कि उस गुड थिंग ये था कि उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई स्टिल, एंड बैड ये था कि ये इंसिडेंट जो है तो इस इंसिडेंट से पता चला कि उसकी प्रिपरेशन में कितनी गैप्स थी, एंड शी डिड नॉट हैव अ प्लान बी. नाउ द फोर्थ पार्ट इज एनालिसिस. What sense can you make of the situation? I should have made a list of several interviewees representing each functional area. If one of them refused to participate, I could talk to the next one on my list. That would have increased my chances of collecting comprehensive data about the department performance. नाउ यहाँ पे उसने उस सिचुएशन को क्रिटिकली एनालाइज किया है कि व्हाट शी कुड हैव डन, एंड देन द कंक्लूजन, व्हाट एल्स कुड यू हैव डन बिसाइड्स. आई कुड हैव वर्डेड माई इन्विटेशन बेटर एंड choose the time to approach the manager more carefully. In this case, I could have obtained the manager's agreement and the interview. इधर उसने कंक्लूजन लिखा है कि वो क्या कर सकती थी. एंड देन हर एक्शन प्लान. इफ़ इट अरोज अगेन व्हाट वुड यू डू, कि अगर फ्यूचर में दोबारा कोई ऐसी सिचुएशन आ गई या कोई ऐसी एक्सपीरियंस उसको हुआ, देन व्हाट वुड शी डू, व्हाट वुड बी हर एक्शन प्लान. फेसिंग अ सिमिलर प्रॉब्लम अगेन, आई वुड नॉट बी दैट स्ट्रेस्ड. I would accept the refusal calmly and immediately approach the next potential interviewee on my list. Now the MCQs here could be कि how many steps are there in the Gibbs reflection cycle, और फिर स्टेप्स के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है. फिर उस स्पेसिफिक स्टेप के बारे में पूछा जा सकता है. फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन में या जो है तो हम अपनी फीलिंग्स कौन से स्टेप में डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन प्लान में हम क्या लिखते हैं, या कंक्लूजन में हम क्या लिखते हैं, एनालिसिस में हम क्या लिखते हैं. तो इस तरह के MCQs आ सकते हैं. Following a reflection model, you can produce a piece of writing that is coherent, persuasive, and has a strong internal structure, like in the example above. To put in short, a reflection model maximizes your chances of achieving a high mark. However, Gibbs reflection cycle is not the only model suitable for writing a reflective report. अब हमारे पास जो अगर आप कोई रिफ्लेक्शन मॉडल फॉलो करेंगे तो जो आपने जो पेपर लिखा होगा इट वुड बी कोहेरेंट एंड परसुएसिव. जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उसका स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखा होगा. अगर आप कोई मॉडल फॉलो नहीं करते देन इट वुड बी रिटन हैफेजर्डली मोस्टली. आपके जो थॉट्स होंगे वो अनऑर्गेनाइज्ड लिखे होंगे, इसी वजह से वो ज़्यादा ठीक नहीं लगेगा.
लेकिन गिब्स रिफ्लेक्शन मॉडल के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द एरा साइकिल मॉडल और कोल्ब्स रिफ्लेक्टिव मॉडल, ये भी हमारे पास मोस्टली यूज़ होते हैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग में। It was all about reflective writing. Thank you very much.